Backyard poultry farming has changed Sonamani Devi's approach towards life. पोल्ट्री पालने के बाद हम लोग को आमदनी बढ़ा है और उसमें हम लोग बाल बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाते हैं और दादा दीदी सब अच्छी तरह से रहते हैं। Sonamani's family, like many other landless tribal families in Goda district, were dependent on forest resources and farm labor. हम लोग का जब पोल्ट्री बिजनेस नहीं था तभी हम लोग घर में ज्वर बुखार, बच्चे की पढ़ाई, नमक तेल में हम लोग का घर का ही धान चावल बेचना पड़ता था। Today, poultry farming directly benefits more than 200 resource-poor women. They were brought together through self-help groups and formed district-level cooperative society. They are provided training by the state-level federation. इस स्कीम के तहत महिलाओं को कार्यशील पूंजी के लिए कर्ज दिया गया है, साथ ही ग्रांट के रूप में महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। The federation designs district-level projects and provides administrative support, mobilizes beneficiaries, and assists access to working capital loan from financial institutions and convergence with other government schemes. कोऑपरेटिव का डॉक्टर ने सभी दीदी को ट्रेनिंग दिया, उसमें वैक्सीन डालने के लिए सिखाया गया, साफ सफाई के बारे में सिखाया गया, जगह बढ़ाने के बारे में सिखाया गया। The project is also good news for ecosystem. जब मुर्गी का लीटर होता है तो एक बैच में 10 बुरा निकलता है, तो आधा एकड़ जमीन में छींट करके धान की खेती में काम आते हैं। With a production capacity of 50 metric ton of live birds per day and profit of over 30 million rupees per year, the project has become the largest poultry operation in eastern India. This is a project where we have converged NABARD, UPNRM Fund and Tribal Development Fund with Specialized SY. And the idea is to create a sustainable, replicable model of producers collective based on NRM activities. अब पोल्ट्री फार्म बन करके हम लोग का बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है, कपड़ा लता अच्छी होती है, खान पान भी अच्छी होती है और महाजन से भी छुटकारा हो गए। हम एक साल में 5-6 बैच मुर्गी पालन करते हैं। इसमें मेरा 15,000 से 20,000 का कमाई होता है, जो कि ऊपरी आमदनी है और इसमें हम अपने से खुद स्वयं खर्चा करते हैं। पति के भरोसे में नहीं रहते हैं, बाल बच्चे का इसमें अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। The project supports women like Sonamani to lead a life of confidence and pride, preparing their role for a brighter future.